Good evening, ladies and gentlemen. Namaskar, Sat Sri Akal, Jai Ma. Today I am continuing with my yesterday's episode on Aghor Tantra and Aghor Vidya, as well as Aghor Gyan. The knowledge of Aghor is essential to practice Aghor. অঘোর বিদ্যার সাধना करते गले अघोर ज्ञानटा अघोर संबंधे जाना अघोर के बारे में सही मायने में ज्ञान रखने से ही तभी जाके अघोर साधन में कुछ उत्पत्तिगत हम लाभ उठा सकते हैं। वैसे तो हमारे जिंदगी में बहुत सारे अटकल होती है, बहुत सारे उपद्रव आती है, बहुत सारे समस्याएं हमको There are many troubles in our life, in our human life, spiritual life. Everywhere we have to face many sorts of problems and troubles. Those we have to shoot with our own ability and capability. তো সেই সব সমস্যার সমাধান করতে গেলে আমাদের হয় নিজের বলের উপর আস্থা রাখতে হবে। নিজের বল, বলং বলং ক্ষত্র বলম, ধিক বলম ক্ষত্র বলম, বলং বলং ব্রহ্ম বলম, এরকম অনেক কথা আমরা শুনতে পাই। This type of many sorts of important matters we have heard so far. But most of all, above all, we have to contain the spiritual knowledge and spiritual strength in our daily life and everyday life. None of the money power, muscle power, পেশি বল, অর্থ বল, কোনো বলই বল নয়। Otherwise you can't gather the spiritual power in yourself, which creates the stability of a human life, the peace of mind. Everything is contained with this sadhana. Aghor sadhana is also that, but you have to mind it, you have to know it. জানতে হবে, বুঝতে হবে अघोर কি। अघोर शब्देर अर्थ কি? What's the actual meaning of अघोर? सही मायने में अघोर का मतलब क्या है? अघोर की शब्दार्थ अगर हम निकाले तो न घोर इति अघोर, जिसका घोर नहीं है। Those who have not the illusions, hallucinations or allusions of attraction of anything else in this worldly affairs. हमारे जिंदगी की किसी भी चीज में, किसी भी ये पार्थिव चीज में घोर ना रहे तभी अघोर की ज्ञान, अघोर की स्थिति प्रतिष्ठा होती है। अब दक्षिण मुख में अघोर मुख है। द साउथ फेस इज अघोर फेस, एंड दिस अघोर फेस, इट इज द कम्बैटिव फेस ऑफ द यम एंड मृत्यु। इट इज द कम्बैटिव फेस ऑफ डेथ and Kal. Mahakal himself is the Kal. And Mahakal, when he is getting the features of Aghor, he becomes the combative force of death also. মৃত্যুকে বিনাশ করতে পারে, আমরা জানি তিনি মৃত্যুঞ্জয়। We know that he is also the Mrityunjay, who have overcome the death, who can give salvation from death also. That is the Aghor and Aghor Tattva Vidya. If you want to practice, you must have to be beyond the limit of Ghor. Also in the mantra, Aghor mantra, you have get three forms of Aghor, three types of Aghorebhya, Ghorebhya, Ghoratarabhya. First of all, it is Aghor, na Ghor. उसका बाद है Ghor. When it is ghor or something like danger, yes, of course, ghor is the danger. In a daily life, for a sadhak, for an intended sadhaka, who want to practice spirituality, যে আধ্যাত্মিকতা সাধন করতে চায় তাকে কিছুটা হলেও অন্তত মায়া বিবর্জিত হতে হবে। थोड़ा बहुत उसको अपने दिल से लालच, चाहत, ये सब से मुक्त होना पड़ेगा, तब जाके अघोर
या आध्यात्मिक कोई भी विद्या साधन करने के लिए उसको ये स्थिति मिल सकती है. बट मोस्ट of all are the family men. Family men have many sorts of demands, and the demand and supply makes the economy and the economic system. We are in the economic system. Those who are the family men, they are in this economic system and they are going to earn for the livelihood. They have to earn and learn from this life. But in that form also, those who have not the demand of something extra, I mean the surplus, the practitioner of spiritual people shouldn't have surplus except only the spiritual power. Spiritual power is the treasure for him. Main treasure is spiritual power. And spiritual power, through spiritual power, if you utilize it properly, যদি এটা সে সঠিকভাবে ব্যবহার করে, সঠিকভাবে এর সম্পাদন করে, कर्मादि क्रियाकांड आदि, ये क्रियाकांडी जो साधक है वो कर्म में अगर अपना ज्यादा कुछ ना सोच के यजमान को, मनुष्य को सोशल सामाजिक जो वेलफेयर जो है, कल्याण जो है, वो कल्याण जो करे, साधन में उसी का अग्राधिकार है. प्रायोरिटी, he got the priority. Of course he have got the priority who don't have the extra alluration, extra greediness, and this sort of all this negative repose, calm, over lasted. Those who have last, who are very much lasted and who have the attraction for the sexual appetites and all this, they can't be a good type of course there are some sort of sexual cohabitation course and everything else in Tantra, but in this Kali Yuga, there is no chance of following any sort of indecency. This sort of things are not permitted by Shiva in Kali Yuga. Your Shakti is your wife. This is the policy, and through this policy, when the husband, wife, they gets their ultimate level of sadhana, and when they don't have any asking, any alluration, any sort of demand from this worldly affairs, then only Aghor Chintan becomes successful in their life. Most of the Aghors, we have seen that they are family men. I don't have any objection for that. But the thing is that, how come it's possible within living in a family, within living in a field of these sorts of appetites, anger, lust, etc. How come you will be able to search that ultimate knowledge, ultimate light of enlightenment of Aghora, who can combat the death also? So Aghor is three types of Ghor, Ghoratar. Aghor is Naghora iti Aghora. Ghora is those who have the last, and Ghoratara. Ghoratara means very, very much, ultimately dangerous. That is Aghora Murti and Ghoratara Murti, Ghoratara Murti. Now the Ghoratara, I have already told you that yesterday that in the Dhyanam, the imagination of the form, in this form, imagination of this form, Aghor Murti is Sajala Ghana Samabham Bhumadang Shankar Netram Bhujagadhara Mogham Jarak Tarvasrag Ragam Parasudamuruk Gankhetakam Barna Chapo Trishikhan Narakapal Bhavayami. तो ये जो मंत्र है, इस मंत्र में कहीं तो काला रंग की कोई उल्लेख ही नहीं है. अब ये काला रंग कहाँ से आया, ये तो हमने आपको बता ही दिया कि काला रंग की जो बाज यूज करते हैं वो ज्यादातर पीर सुलेमानी, ये सुलेमानी तत्व में इस्लामी जो धर्म है, इस्लामी जो तंत्र है, उसमें ये यूज किया जाता है. तो अघोर जो मत है वो अगर मत कहीं जाके इट हैड गॉट मिंगल्ड विद दी Nath Pantha and Peer Pantha also. As why most of the Aghor people of now, new generation, they are preferring the black robes. Black robes is a very attractive
Black is such a color which mingles with the which can digest all sorts of colors. All the 7 colors of white colors. If you break the white colors, you will get 7 colors. Waves your, and that color, all those color, they become distracted in the single black color. Now our mother is also tamasi, but what our intention is not to follow the tamas or darkness. আমরা অন্ধকারের পথে যাচ্ছি না, তমসায় আমরা সবাই ডুবে আছি। মানুষ জন্মে পশু, আমাদের সব তত্ত্বেই বলা হয়েছে, বেদাদি জায়গাতেও সেখানেও বলা হয়েছে, জন্মনা জায়তে শূদ্র সংস্কার বীজ মুচ্যতে বেদ পাঠে না ভবতি। তো সাধনার মধ্যে দিয়ে, থ্রু দি ওয়ে অফ সাধন, practice of spiritual entity, spiritual side, one man from the darkness, he can get the light and enlightenment of the Almighty Mother or the Param Brahma. ब्रह्म स्वरूप माता की हम साधना जो करते हैं, उसका साथ साथ अघोर का जो तत्व है, शिव तत्व जो है, I have already told you, शिव is the seed. शिव वचन बीज, शिव बीज देते हैं, और पृथ्वी माता हम जिसका ऊपर, जिसका गोद में पले बड़े हुए हैं, she is the mother, and in the womb of the mother the seed becomes fertilized, and then gestation after gestation, after a certain time, each and everything, whatever it may be, an animal, a tree or anything else, it becomes flourishing, it becomes flourished, and after a certain time it gets birth to a big tree or a human being. Now the human being, after birth, he is not until unless he is reformed. जब तक संस्कार नहीं बनता तब तक तो कोई ने, किसी ने ये तो नहीं हो सकता कि उन्होंने संपूर्ण रूप से ज्ञान की आलप प्राप्त कर लेगा. और टू गेट द एनलाइटनमेंट ऑफ दिस नॉलेज, अघोर नॉलेज is a big thing and is a big sort of sadhana which a man can be exalted, excellence of the sadhana. This becomes at the end of the life. This sadhana, practically it can be done at the end of the life when each and every works will be completed. And during our Chaturashram Paddhati, when Banprastha would come, and after Banprastha সময় আমরা যেমন সংসার ত্যাগ করে, কর্ম ত্যাগ করে ভগবত চিন্তন করতাম, আমাদের যে চতুরাশ্রম পদ্ধতিতে যে ব্যাপারটা আছে, the same thing also in our tantra. And for that time, this sort of sadhana should be done properly. Otherwise, this will be a media of earning. This will be a media of showbiz only. For sadhana, you can do sadhana in your home without any robes, without any Shiv sadhana. Shiv has no dress code. And also in our Kola Marga there is the very, very popular sloka, Anta Shakta Vahi Shaiva Savhang Vaishnava Mata Nana Rupa Dhare Kola Vicharanti Mahitale. तो अंत शाक्त बहिशैव, बहिरावरण, हमारे जो बहिरावरण, दी एक्सटर्नल एटवेयर से जो बाहरी दृष्टिवंशी से जो ये ड्रेस कोड है, ये ड्रेस कोड का कोई मायने नहीं रखता शिव तत्व में. तो बाहरी रंग दिखाने से कुछ नहीं होगा. काला रंग हो या कोई भी रंग हो, बड़ा बड़ा माला हो, बड़ा बड़ा बाला हो, कोई फर्क नहीं आएगा. मैंने ये माला पहन के रखा क्योंकि मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है, आपको भी, मेरा शिष्य को भी थोड़ा अच्छा लगता है. ये सब शिष्य के, ज्यादातर शिष्य को ही दिया हुआ है. तो फॉर द सेक ऑफ साधना यू नीड नथिंग एक्सेप्ट योर हार्ट एंड योर ब्रेन एंड योर कंसंट्रेशन. तो देन अघोर मस्ट कम एंड अघोर मस्ट ब्लेस यू फ्रॉम द वेरी कोर ऑफ योर लाइफ एंड हार्ट. जिंदगी के सारे समस्याओं की जड़ में अघोर की साधन बहुत ही लाभदायी होती है. परंतु जो इसको सही ढंग से साधन करेंगे
उसके लिए अघोर तो मुक्ति का मार्ग खोल देती है, परंतु जब तक भुक्ति संपूर्ण नहीं हो रही है तब मुक्ति कैसे होगी, और हम जम को कैसे कड़ी आंख दिखाएंगे? हाउ फार वी शैल बी एबल टू endanger Yama? How far we will be able to face the combat the Yama until unless we don't have, we can't live the appetites of love, alluration, sex, etc. These are the main target of अघोर तत्व। अঘোর তত্ত্বের মূল বিষয় এটা। আমি কালকেও বলেছি যে আজকে হয়তো অনেকেই আছেন যারা অঘোর সাধনা করছেন, and also they are after অঘোর sadhana they are being in their early life they have started it, and after doing this sadhana they are getting the marg of bhukti, भोग की मार्ग खुल गया, शादी हो गया, बच्चा हो गया, संसार में जकड़ गया। कैसे हो गया अगर साधन? कैसे हो गया महासाधन, गंभीर साधन? कोई भी if you want to do an in-depth sadhana, you have to follow, you must to follow the total drastic sadhana, drastic sadhana, and for a result oriented sadhana, ফলদায়ী কোনো সাধনার জন্য অবশ্যই তোমাকে অন্তর্মুখী হতে হবে। কিন্তু ফ্যামিলি, অল দিস ফ্যামিলি সিস্টেম অ্যান্ড দি ওয়ার্ল্ডলি expectations, allusions, this hinders the way of the sadhaka to concentrate within themselves. তো এখন যেটুকু সম্ভব সেটুকুই করা উচিত। আমি মনে করি যে আপনারা যারা করছেন সকলেরই উন্নতি হোক, সকলের সিদ্ধি লাভ হোক, কিন্তু আগে ভিতটাকে শক্ত, ইউ হ্যাভ টু মেক দ্য প্লেন স্ট্রং and then only you will be able to succeed in the last step. Brahma Shakti, Brahma Vidya, that is also Aghor Vidya is also a Brahma Vidya, and our Mata is Brahma Swarupini energy, and ultimate energy must bless you. Aghor Dev, Aghor Rudra Devata must bless you. So far I know, from my knowledge, I have told you that it is the very, very powerful Vidya, and there are many sorts of utilization of it. Pros and cons both are there. ভালো খারাপ দুটো দিকে আছে, বুরা ভালা দোনোই है, but you have to choose and utilize and practice the positive side of the sadhana. This much for today. Thank you very much. Jai Maa.